And like I was just saying, high-level NCB sources have told Republic Media Network that all the 4 actors who have appeared before the NCB have read out from the same script. Their common defense has been hash is not drugs and that the investigators don't understand the slang that is used in Bollywood. Similar statements that were made by all the 4 actors, be it Sara, Shraddha, Deepika or Rakul Preet, as they went on to completely deny the allegations and most importantly as they accepted the drug chats, but they said that hash does not imply drug, but at the same time it is slang that is used in Bollywood. Drug is a slang in Bollywood English. Clearly tutored replies that were given by all the 4 actors in their defense, and they went on to say that hash is not a drug. Remember, all the big actors who were under the scanner of the NCB and had suspected that their that their names would certainly be called out, had begun to consult their lawyers well in advance. They were seeking legal advice and they had come much prepared to face the questions of the NCB. Very measured responses that were given by all the actors, but most importantly, what is shocking is the fact that all the A-listers read out the same script in front of the NCB officials. I want to cut across to my colleague Shikha, who is joining us live on the broadcast. Shikha, exactly like I was saying, that somewhere they were prepared, somewhere they were consulting their lawyers well in advance because they knew that their names could tumble out any day, and which is why very measured responses, most answers in yes and no. But this is most shocking. They deny the most obvious lingo and go on to say that this is slang used in Bollywood. बिल्कुल, देखिए सुईशा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चीज़ें चल रही हैं, मतलब जो ड्रग नेक्सस है उसके ऊपर जिस तरीके से वार किया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स जो ये सोचते थे कि कभी भी उन तक नहीं पहुंचा जा सकता है, अब वहां तक पहुंचा जा रहा है। 3 फेजेस में ये जांच की जा रही है। पहला फेज ये है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और वो पेडलर्स। दूसरा फेज जो है जिसमें ए-लिस्टर, एक्टर और एक्ट्रेसेस। तीसरे फेज में क्या है, ये बड़ा सवाल है। इसलिए तीसरा फेज यानी कि वो किंग पिन, अगर 3 फेजेस में जांच हो रही है तो तीसरा फेज यानी कि किंग पिन, यानी कि मुख्य आरोपी जिस तक एनसीबी पहुंचना चाहती है। इसलिए देखिए, हर बार मैं यही कहती हूं कि एनसीबी जो है वो एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। कैसे स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है? पहले पेडलर्स को पकड़ा, उनसे सबूत इकट्ठा किया, चार्ट्स निकाली, तमाम जो पूछताछ में नाम निकले उन तक पहुंचे, यानी कि मैनेजर्स तक पहुंचे। मैनेजर्स से वो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स तक पहुंचे। अब आगे ये भी हो सकता है कि कौन कंपनी है, थर्ड फेज में हम कह सकते हैं कि जो कौन कंपनी है जिससे बड़े बड़े लोग जुड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, उन तक पहुंच सकती है एनसीबी। तो कौन कंपनी? तो एक एजेंसी है, एक कंपनी है, इसकी जैसी 6 से 7 कंपनियां हैं, 6 से 7 कंपनी। और जिस तरीके से हमने देखा कि मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने 2019 का वो वीडियो था उसके बारे में कंप्लेंट की थी, उनको यहां पर धमकियां मिल रही हैं। धमकियां क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो देखिए तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब ये कंप्लेंट फाइल की, एनसीबी को सौंपी गई, एनसीबी ने मुंबई एनसीबी को सौंपी, उसके बाद जांच आगे बढ़ी, वो वीडियो भी ऑथेंटिक पाया गया है, तमाम चीजें उसमें हो रही है। तो अब चूंकि वो जांच आगे बढ़ेगी तो उनको डर सता रहा है, उन जो बड़े रसूखदार लोगों को डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि हम तक भी एनसीबी के हाथ पहुंच जाए। इसीलिए अब धमकियां दिलवाई जा रही हैं कि इस जो एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग, उनको रोका जाए। यानी कि वो नहीं चाहते, हर तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उन तक एनसीबी नहीं पहुंचे। लेकिन एनसीबी अपनी स्ट्रैटेजी में एकदम क्लियर है, एकदम वो उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है। यानी कि 3 फेजेस में आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन लोगों का मोबाइल भी जब्त किया गया है। इसीलिए मोबाइल जब्त किया गया है ताकि वो किंग पिन और मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके। They might have given very measured responses and completely denied what they had spoken in those drug chats while admitting to the chats. But let's not forget, Shikha, that they have not been given a clean sheet yet. And as sources suggest to us that it is very much possible that they will be called in for a second round of questioning. We continue to track the story very closely. For the moment, thank you for joining us.
And well, as the NCB expands its probe into the Bollywood drug nexus, several top names of the industry have tumbled out. A-listers like Deepika Padukone, Shraddha Kapoor and Sara Ali Khan have been questioned. NCB top boss Rakesh Asthana has taken stock of the investigation and has been handed a drug dossier by the probe officers. As the agency goes after the big fish, will more top names emerge? Here's a report. As the Bollywood drug nexus unravels, big guns are sniffing trouble. Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan, Rakul Preet faced the NCB heat on Saturday and recorded their statements with the top agency. As the investigation progresses, NCB DG Rakesh Asthana flew in from Delhi to Mumbai to take stock of the situation. एनसीबी डीजी राकेश अस्थाना कल दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और मुंबई पहुंचने के बाद जो मीटिंग है वो रखी गई थी, जिसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े, डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और अन्य एनसीबी के ऑफिशियल्स मौजूद थे। सारे मुद्दों को लेकर अब तक के एनसीबी मुंबई एनसीबी के ओर से किन किन चीज़ों की जायजा लिया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस है, इन सभी का इंफॉर्मेशन राकेश अस्थाना को दिया गया है। Asthana has reportedly set a 6 months deadline to file a charge sheet and has given a green signal to the NCB teams to go all out to investigate the drug nexus. The late night meeting held with Asthana had several other top cops, including investigating officer Sameer Wankhede and deputy director KPS Malhotra. Sources also revealed that there was a discussion on Karan Johar's 2019 party video. एनसीबी के कुछ ऑफिशियल्स वो खुद आज यानी सोमवार को खुद दिल्ली जाकर अपना रिपोर्ट, ये दो केस जैसे हमने बताया 15/20 और 16/20 के केस को लेकर, जहां पर एक तरफा एनसीबी के मुंबई जोनल यूनिट की जांच चल रही है, वही दूसरी ओर एनसीबी की एसआईटी टीम जो कि दिल्ली से आई है उनके ओर से जो जांच चल रही थी, वही रिपोर्ट एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को दिल्ली में जाकर देने वाली थी, पर अब वो शेड्यूल को पोस्टपोन कर थर्सडे को किया गया है। यानी अब एनसीबी जो है कई आने वाले दिनों में जहाँ पर अपनी जाँच लगातार जारी रखी गई है, वहीं पर आने वाले कई लोगों को, जिसमें सेलिब्रिटीज हो या फिर ड्रग पेडलर्स हो, उनको सवाल किए जाएंगे, उनको समन्स भेजा जाएगा। The focus of the NCB is clear and the emphasis lies on finding the kingpin of the drug cartel. Moreover, no clean chit or fresh summons have been given to any of the celebrities who were interrogated by the agency. Widening the angle of the investigation, 20 high-profile drug peddlers are also under the lens of the NCB. Bureau Report, Republic TV. Well, we earlier got you exclusive details on NCB line of investigation in the Bollywood drug racket. The NCB investigation is now divided into 3 parts. Part 1 includes probe against Riya and her team. Part 2 is investigation against actors Deepika, Sara and Shraddha, like we have been reporting to you. And in the third part of the investigation, big names are set to emerge in the probe. Here's a report. Top Bollywood stars arrived at the NCB's office on 26th September. The A-listers came under the Narcotics Bureau scanner for the alleged role in drug nexus. Republic now has details of the NCB operation. Sources reveal the investigation is divided into 3 parts. Prime accused in Sushant Singh Rajput's death case, Riya Chakrabarti and her brother Shauvik's arrest was part of phase 1 of the investigation. रिपब्लिक के कैमरे पर रिया आपको 27 धारा 27 के तहत रिया आपको रखा गया है। आपको 10 साल की सजा हो सकती है। रिया 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है? रिया रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है। Phase 2 led to the questioning of top actors like Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan and Rakul Preet Singh, all in relation to FIRs filed in connection with Sushant case.
Narcotics Control Bureau today had summoned Deepika Padukone at around 10 a.m. in the morning. She reached there at around 9:48 and was grilled for at least 5.5 hours by the officials of NCB. Now, what we are given to understand is that Deepika's statements are not satisfactory and there are ample chances that she could again be summoned by NCB officials. What we are also given to understand is that as per the sources of NCB, Deepika Padukone was evasive and the statements which she made were the tutored ones. Now we have to wait and watch how the entire investigation in this case will move ahead as far as this drug nexus in Bollywood is concerned. Phase 3 will most likely bring to light bigger names who operate behind the scenes. In third phase, Kingpin, we know that NCB has already made it very clear that their main agenda is to look for the Kingpin who is running this entire drug nexus in Bollywood. But let us tell to our viewers, as far as this role of Kshitij Ravi Prasad is concerned, he is going to play a very important role, crucial role in telling the more and more names. And though he is not giving more information, that's why NCB also sought his custody. He will be in NCB's custody till 3rd of October. What is more important needs to mention that he's the same man who was picked up from his residence, who has got links with Dharma Production. And sources say this investigation process will last for close to a month. With NCB's massive crackdown on the drug nexus, panic has struck the industry, with many A-listers now seeking legal help. Bureau Report, Republic TV. And well, just days after the NCB confirmed the authenticity of the 2019 Karan Johar party video that is under the scanner following Shiromani Akali Dal leader Manjinder Singh Sirsa's complaint, he has now claimed that he has received a threat call from the stooge of a certain quote-unquote bhai. He claimed the caller asked him to withdraw his case on Karan Johar or could face serious consequences for his life. Take a look at this report. 1 week after Shiromani Akali Dal leader Manjinder Singh Sirsa lodged a complaint against Karan Johar's 2019 party video, that the party of this Karan Johar, where you can see in the video people consuming the drug and they all are stoned in that video. It needs to be investigated. 1 day after he alleged that a top filmmaker is the kingpin of the Bollywood drug cartels, करण जौहर जो अब तक अपने आप को किंग पिन समझता है और किंग पिन है, इस सरगना है इस सारे काम का, किस तरह से वो लोगों को इस्तेमाल करता है, नए नए स्टार को इस्तेमाल करता रहा, उनको यूज किया, अब्यूज किया. The Delhi MLA has claimed receiving threat calls from Pakistan. He claimed the alleged caller asked him to withdraw his complaint with immediate effect or a certain bhai will knock him off. अभी मुझे पाकिस्तान से एक फ़ोन आया. फ़ोन करने वाले ने अपना नाम मोहम्मद वसीम बताया और मुझे ये धमकी दी कि भाई ने कहा है कि जो करण जौहर बॉलीवुड वाला केस है इसको मैं वापस लूं. मैंने कहा भाई ये भाई कौन है? मुझे कह रहा है कि तुम भाई को नहीं जानते, पूरा देश भाई को जानता है और तुरंत इस केस को 2 दिन में वापस ले और ये नौटंकी बंद कर, नहीं तो तेरे को ठोकेंगे. मैंने कहा यार बता तो दे भाई है कौन? मुझे कह रहा क्यों मरना चाहता है, क्यों मरना चाहता है, केस वापस ले. मैं कह रहा हूँ भाई जी ने कहा है केस को वापस ले. मैंने कहा भाई बता भाई है क्या है ये भाई? और मुझे धमकियां दे रहा है कि तेरे को और तेरे परिवार को मारेंगे, तुझे पता चल जाएगा भाई कौन है. तुझे क्या, तुझे जब तेरे को गोली लगेगी तो तेरे परिवार को पता चल जाएगा भाई कौन है. मैंने ये शिकायत पंजाबी बाग के SHO को दे रहा हूँ, DCP वेस्ट को दे रहा हूँ. मैं चाहता हूं दिल्ली पुलिस इसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करे और जानकारी ले. ऐसी हल्की बातें करके हमें जो डराना चाहता है, हम डरने वाले नहीं. The politician has urged the Delhi police to take note. But if this sensational claim is true, several questions emerge. Is Sirsa being threatened for asking for a cleanup of the drug mafia thriving in Bollywood? Also, there are questions about the mysterious character who he claims threatened him at Bhai's behest. Who is this so-called Bhai? Does he have any link to Pakistan? And is this alleged threat call to Sirsa a reaction to the larger crackdown on possible Pakistan drug links?
Majinder Singh Sirsa has been very vocal about the drug culture that has been prevailing in Bollywood, and in fact, he earlier this month also met the NCB chief Rakesh Asthana in New Delhi to warn him and also to lodge a complaint against the bigwigs who were in fact seen in a very drugged state from a video that got featured last year in 2019. Bureau Report, Republic TV.